Okay. Now let's start the new topic, which is behavior of light. Behavior of light at the behavior of light at the interface of two medium. Okay बेटा, बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। अब देखो यहाँ पर हम बेटा एक बहुत शानदार सा डायग्राम हम बनाने वाले हैं। ठीक है, डायग्राम अगर आपको ठीक से समझ में आ गया देन आगे का चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सिंपली सबसे पहले डायग्राम हम बनाते हैं। तो देखो बेटा, अभी इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सब आपको सिर्फ स्क्रीन पे देखना है, लिखना नहीं है किसी को भी। ओके, ये कैमराज मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, अगर किसी ने नीचे ऐसे लिख करके लिखने की ट्राई किया तो मैं फिर बेटी क्यों में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, सिंपल सा हमारे पास में क्या है, सपोज दिस इज द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, है ना बेटा। ये क्या है बेटा, इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम। तो ये तो हो गया बेटा क्या, मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम टू। एंड दोनों मीडियम को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए एक डिफरेंट टाइप का हम मटेरियल यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये मीडियम कुछ इस टाइप का है, हमें नहीं पता ये क्या है, ग्रीन कलर का बट कुछ है। तो यहाँ पर मीडियम क्या है बेटा, डिफरेंट है। समझ आ रही है बेटा बात? यस सर। यस। तो देखो ये मीडियम हमारे पास हो गया सेकंड, एंड जो फर्स्ट मीडियम है बेटा वो क्या है, ऊपर वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो दोनों मीडियम में क्या होगा बेटा, एक इंटरफेस होगा, मतलब इनके बीच में एक ऐसी लेयर होगी जो क्या करेगी, एज ए मीडियम मीडिएटर वर्क करेगी, जिसका काम दोनों मीडियम को क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। यहाँ पर ये दोनों मीडियम एक दूसरे से डिफरेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होगा बेटा, इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम हो गया। देन व्हाट विल हैपन कि जैसे हमारे पास में लाइट रेज क्या होगी बेटा, यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम ले लेते हैं बेटा लाइट रेज को। तो यहाँ पर जो लाइट रेज है वो है बेटा इस तरह से। ठीक है बेटा, तो देखो ये लाइट रेज हमारे पास आई, तो ये लाइट रे को क्या बोला जाएगा बेटा, इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट। इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। एंड जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होगी बेटा, ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा बताओ मुझे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वेरी गुड, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड देखो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन द लाइट रेज स्ट्राइक्स ऑन द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, then basically three phenomena can be happening. And first phenomena, that the light rays bounce back into the same medium after striking on the interface between two medium, and this is called the reflection of light. The bouncing back of light into the same medium after striking on the interface between two medium is called the reflection of light, and this is called the reflected ray. Yes or no beta? This is called reflected ray. And देखो रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पर एक मैंने एक डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ना, इस डॉटेड लाइन में क्या बोला जाता है बेटा, नॉर्मल। नॉर्मल बोला जाता है। एंड व्हाट इज नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे हुआ तो बेटा, अब नॉर्मल कैसे होगा ये, उस पॉइंट Sir, the point where incident ray and reflected ray meet. नो,
Normal is an imaginary line which is always perpendicular to the surface. It may be any surface, curved surface, straightforward surface, प्लेन सरफेस, कैसी भी सरफेस हो सकती है बेटा, और इमेजिनरी लाइनें आपको दिखाई कभी भी नहीं देगी. ओके, तो फर्स्ट फिनोमेना जो हमारे पास होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, बताओ मुझे. फर्स्ट फिनोमेना इज Reflection. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Reflection of light. And it may be possible that the ray in second क्या होगा बेटा, second phenomena क्या होगा, that the some part of the light energy is transmitted to the second medium but on the different paths. That is called the refraction of light. Basically this is the original path of the light beta, yes or no, but due to the density difference, due to the medium difference, it will bend from its original path, yes or no, and this is called the refracted ray. When some part of the light energy is transmitted into the second medium, but in the different path, and that different path the followed by the ray is called the refracted ray, and this phenomena is known as the refraction of the light. This phenomena is called refraction of The light which is getting reflected is called as refraction of light, right? no, the ray which is refracted is called the refracted ray, and this phenomena is called the refraction of light. Means to say, reflection of light means to say the bending of light from its original path. ठीक है, देखो यहाँ पर इसका ओरिजिनल पाथ ये है बेटा लाइट का, है ना. Yes sir. ओरिजिनल पाथ ये होगा, बट देखो जिससे सेकंड मीडियम में वो एंटर होगी तो अपने पाथ से डेविएट हो गई बेटा, है ना, अपने पाथ से बेंड हो गई ना, तो उस द बेंडिंग ऑफ लाइट, दैट बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब, इसको रिवाइज कर देते हैं एक बार. ओके, सो बेसिकली थ्री फिनोमेना कैन हैपन हियर: रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट. हाँ दीदी बेटा, क्या डाउट है? सर ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों साथ में हो सकता है ना? हाँ बेटा, हो सकता है. जैसे आपने, हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप क्या देखते हो, शॉपिंग मॉल के बाहर जो ग्लास लगा हुआ होता है, तो आपको ग्लास में से आपको अंदर की चीजें भी दिखाई देती है बेटा? नहीं सर, नहीं दिखती. अंदर की चीजें दिखाई नहीं देती बेटा? अच्छा हाँ सर, वैसा दिखता है, मतलब दिखता है ना, लेकिन हाँ बाहर से आप जब देखते हो खड़े खड़े तो आपको समटाइम्स आपको क्या होता है, उस ग्लास में से अपनी भी इमेज दिखाई देती है. Yes, sir. दिखाई देती है ना बेटा? नो सर, हमारी कैसे दिखेगी? बेटा समटाइम्स दिखती है, वो हमेशा नहीं दिखती है ना. कभी Sir, कभी हल्की हल्की दिखती है. हाँ, हल्की हल्की दिखती है It's बेटा. not complete. हाँ, वो कंप्लीट नहीं होता, बहुत लाइट होती है, तो उसी को क्या बोला जाता है बेटा, रिफ्लेक्शन भी होता है वहां पर, और रिफ्रैक्शन की वजह से आपको अंदर की लाइट्स भी आपको दिखाई देती है, अंदर जो चीजें होती हैं. यस और नो, that means it is possible that the reflection and refraction of light can be happen at the same time. Okay, Yes sir. okay, note it down first, then we will move on. सर जो ओके, तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं बेटा. स्टार्ट करते हैं बंदा वन. क्या होगा बेटा, पेन light rays strikes on the interface between two medium .
then following three phenomena or three effects, three effects में, and three effects. Number one क्या था बेटा? A part of light ray, a part of light is bounced back into the same medium, same medium is called reflection of light, and second one is a part of light. यहाँ पर लाइट कौन सी होगी बेटा? इंसिडेंट लाइट होगी, यहाँ मेंशन कर लेना. ओके, a part of incident light, यहाँ पर मेंशन कर लेना. A part of incident light is transmitted into the second medium, but along a change to direction is called refraction of light. Refraction of light. And third one is the remaining part of the light, यहाँ पे हम एनर्जी लिख सकते हैं ना बेटा? एनर्जी is absorbed by the interface is called absorption of light. Okay, बेटा, note it down. Now let's start the characteristics of light. देखो हमने बेटा लाइट के नेचर को हमने डिस्कस किया. ठीक है, लाइट जब किसी भी स्ट्राइक पे सरफेस पे स्ट्राइक करेगी देन उसका क्या क्या फिनोमेना हो सकता है वो हमने डिस्कस किया. देन बेस्ड ऑन आवर स्टडी we can conclude that the some characteristics of the light which it shows. क्या क्या हो सकती है बेटा बताओ? वन बाय वन आप ही को बताने हैं बेटा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइट. Light always travels in straight line. Light Characteristics doesn't of need the medium to travel. characteristics of the light. Okay, one by one बताते जाओ बेटा. फर्स्ट वन क्या था? Light is an electromagnetic wave and it does not need a medium to Okay, travel. light is an electromagnetic wave. Okay, very good. It doesn't. Light always travels in straight line. Electromagnetic wave and does not Need a medium. does not require a medium to propagate. Medium to propagate. Yes or no? Second one क्या बोला बेटा? Light has dual nature, है ना? Light has dual nature. Dual nature कौन कौन सा होगा बताओ? Wave and particle nature or photon nature. Particle and wave nature. Good. And third one क्या बोला था बेटा? Light always moves in a straight line. Okay, light always move in a straight line. Always move in a straight line or
Light travels at the speed of 3 into 10 to the power 8 in vacuum meters per ओके, second. यस इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट is 3 into 10 raised to power 8 meter per second in वैक्यूम। क्या होगी बेटा कि जब सेम किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे वो क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो क्या हो जाएगी, वो ऐसे बाउंस हुई, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा। मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो उसका वहां पर क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन होगा बेसिकली, है ना। तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइट undergoes reflection Maximum. from to polished surface। सर अगर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन लिखना होगा तो पॉलिश एंड ओपेक लिखना पड़ेगा। हाँ बेटा, पॉलिश सरफेसेस, चलो यहाँ पे, चलो ये भी इंक्लूड कर लो, सर सच है। ओपेक होना जरूरी है। किसका ओपेक होना जरूरी है बेटा? सर पॉलिश सरफेस इसका। हाँ, सच एज मिरर्स में हमारे पास होता है ना। हाँ बेटा, Sir, lights get deviated through a medium from ऐसे inter ऐसे लिख surface. सकते हैं ना बेटा, लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। Yes, sir. ओके, तो हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट, आप अपने अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। लाइट अंडरगोज refracted refraction when it goes from medium 1 to medium 2, medium 1 to another medium ऐसे बोलते हैं, another medium। ओके बेटा।